Respected principal sir, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर साहब आशीष जी, जो टीचर्स बैठे हुए हैं, सीनियर्स बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर आपने अभी देखा होगा, मैं डॉक्टर गणेश शंकर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर गणेश शंकर है। अभी एडिटर साहब कह रहे होंगे पूर्वज के नाम पे कॉलेज है, तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज के नाम पर ही कर दिया। मैं यही कानपुर का रहने वाला हूँ और 2016 से अभी मार्च 23 तक मैं यहाँ था, अभी फिर 5 में मेरा ट्रांसफर हो गया। तो इसमें मेरे सीवी में अपनी सीवी जो था उसमें आपने देखा होगा एक्स एसोसिएट प्रोफेसर लिखा। तो एक्स पहली बार मेरे नाम से कहीं पर अटैच हुआ है और एक्स जो है सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने गूगल पे आज ये लेक्चर देना था, तो I was so thankful to Principal Sir and Seema ma'am, everybody who conducted this beautiful program. But Dr. Ganesh, you have to send your CV. So I wrote X and then I searched X का meaning होता क्या है। तो X मैंने गूगल पे डाला, उसका फुल फॉर्म ऑफ X, तो उसने पता है गूगल क्या उसका आउटकम दे रहा है, गूगल लिख रहा है एग्जॉस्टेड। गूगल उसमें फर्दर दे रहा है एग्जीक्यूटेड। मैंने कहा ये भाई अरे इसमें एक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अच्छी चीजें एक्सीलेंट भी लिख सकता था। Jokes apart, in this I have been assigned to talk about the professional qualities of doctors, what's our role in the society. Things have already been spoken a lot. Principal sir has given a take-home message in the form that we have to have very good communication skills. अगर लोग कहें, उन्होंने एग्जांपल दिया कि मंत्री साहब के रिलेटेड ने कहा कि सिर्फ आप ठीक से बात कर लें, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिली मेंबर दे वांट। और एडिटर्स आपने तो हिंदू मतलब एक मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं उसका पूरा डाइसेक्शन इतना सुंदर तरीके से आपके सामने किया। बहुत सारा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आप लोग बहुत टायर्ड हो गए होंगे। बस कुछ बातें करता हूं और विद इन मेरा टाइम तो 30 मिनट्स का है, मैं कोशिश करूंगा उसके पहले ही वाइंड अप कर दूं। डॉक्टर्स जो टर्म है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट हमारी सिर्फ ब्रेड बटर ही नहीं होता, पेशेंट इज आवर द ग्रेटेस्ट रिस्पांसिबिलिटी। So the patient came from the Greek word called patience. Patience के बारे में बहुत सारी बात आशीष ने एडिटर साहब ने की। So the patience come from the Latin word means the sufferance and forbearance. So the role of a doctor is definitely not to treat each and every patient, cure each and every patient, but definitely the role of we doctors is to reduce this pain, this sufferance, this forbearance, and make sure nobody leaves a clinic of the patient, chamber of the patient without any hope. Hope doesn't mean the club promises कि patient को fourth stage CA है, carcinoma है, और हम कहने नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका patient. But the thing is this, we have to make the pain and sufferance to maximum low, जितना उनका पेन कम कर सकें और उनको एक होपफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर्स के बेसिक ट्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाई दिस लेक्चर हैज बीन प्लान्ड, बिकॉज़ कि दीज हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट बीन ट्रेन्ड विद दोस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। एडकॉम मॉड्यूल मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब एडकॉम मॉड्यूल की ट्रेनिंग हो चुकी है जिसमें कि हमें बताया जाता है कि डॉक्टर्स का मतलब आप आए यहाँ पर और what you expect that you will learn medical science in the form of medicine, surgery, ortho, whatever it is. But the purpose of being a complete doctor is entirely different from just learning the clinical skills. So there are 5 traits or 5 requisites that you have to fulfill before you complete your medical profession as a specialist doctor. So the traits are, first of all, there are 5 traits. One is a clinician, second is a communicator, third is a lifelong learner,
then leader and professional. So if you will see that I have joined the department of gynae and I will learn how to do hysterectomy operation and complicated surgery. But believe me, becoming a doctor, complete doctor and expert in entirely different. So you have to have very good communication skills and clinical skills, leadership, learning and full professionalism. So what a good clinician need? एक अच्छा डॉक्टर बनता कैसे? क्या traits होते हैं clinician के? Clinician is entirely different from a layman. During the training of your 5 year in MBBS and further 3 year in specialization, you turn your body, your mind, your heart, your way of thinking from a layman onto an expert. डॉक्टर की आंखें, डॉक्टर के नोज, डॉक्टर की ईयर, फिंगर्स सारे बहुत ज्यादा ट्रेन होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एनी लेमैन. So if you are thinking that you would be learning or theory or just attend the classes and to become expert, that's a myth. Unfortunately, ऐसा नहीं होगा. So you have to have trained your head to toe yourself. You have to have very good level of understanding the form of patience, as has been talked a lot by Ashish ji. Patience होना चाहिए. Empathy is a trait which you have to learn and you have to practice. Empathy बहुत काम की चीज होती है. Unfortunately, डिग्री हाथ में आ जाती है, लोगों को पता नहीं होता है कि empathy होती क्या है. कुछ लोगों की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होती है, कुछ अपने करियर में बहुत एक्सेल कर रहे होते हैं, और कुछ को समझ में नहीं आता है. मार्क्स तो मेरे बहुत ज्यादा आए थे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस क्यों नहीं चलती? रीजन क्या है? Because the person doesn't understand the concept of empathy, you don't understand how to make yourself feel the way the patient is feeling. And if you practice it, then you can learn it. You have to have very good level of understanding of how to establish a rapport. अगर कोई डॉक्टर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझता है कि rapport establish क्या होता है, तो उसकी प्रोफेशनल सक्सेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं. Rapport establishment, what is rapport? Do you understand how you talk to a patient, whether the rapport is being established or not? So there is a spontaneous responsiveness. When you talk, you ask questions or the patient asks questions, you start responding. Like the patient also start responding. So there is a spontaneous, harmonious responsiveness between a doctor and patient, which establishes a good therapeutic alliance. अगर आपके चैम्बर से पेशेंट बात करके निकला और बाहर जाके बोलता है कि वह डॉक्टर साहब से बात करके मजा आ गया, तो बिलीव मी आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे या जिनके हाथ में एमएस या एमडी की डिग्री हो जाती है वो इस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं समझ पाते हैं unfortunately. So you need to understand कि how to establish rapport while talking. What are the tricks and traits? So you have to have good level of rapport establishing abilities. You have to have very hard working attitude. As I said, I started my talk. There is a training module in the MBBS first year we call ATCOM. Means ATCOM means A means attitude, ET means ethics, and COM means communication. If you don't understand what is the attitude of a doctor, what is the ethical values of a doctor, or what is the communication skills of a doctor, believe me, dear young students, you will be lacking a lot despite attaining a lot of big and big degrees. So you need to understand how a doctor thinks, how a doctor behaves, how a doctor understands the condition of the patient and treats with the highest degree of ethical values, maintaining the highest moral standards. And communication तो key है, is the backbone of doctor-patient relationship. अगर communicate ही करना नहीं आया, आप कितना skillful होगे, कितने अच्छे surgeon होंगे, कितनी अच्छी diagnosis बनाते होगे, but believe me, आपको हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा. बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स यूजी या एमडी एमएस में कम आते हैं पीजी में. प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त चलती है उनकी. चारों तरफ है, इसको सोचने की बात है, कर जाना सोचना होगा. Now the communication, and then you need to understand the clinical skills, then you have to understand the communication.
जैसे कम्युनिकेट करने में क्या आर्ट होती है, कैसे होता है कि हम कम्युनिकेट करें और लोग मेरी बात सुन लें, मेरा पेशेंट मेरी बात सुन ले अच्छे से। तो ये टू अंडरस्टैंड कि communication doesn't mean that I'm talking something and just conveying my message onto you. The thing is this, the communication means whether my body language, my facial expressions, my gesture, my level of confidence is up to a significant standard or not, and they are well trained or not. How you can modulate your voice, how you can at times speak slow, how you can speak fast, what are the word selection, in what which language you will be speaking. गांव का आदमी है तो उससे कैसे बात करोगे, शहर का आदमी है तो कैसे बात करोगे, इनके हिंदी डायलेक्ट्स हैं बिल्कुल बहुत सारे। आप अगर जालौन का कोई पेशेंट आता है तो देखो उनका एक डायलेक्ट होता है, उनके डायलेक्ट सीखने होते हैं। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। हमें कई बार पता नहीं होता है, आप जो मेरे सामने आज बैठे हुए हो, आपकी एवरेज एज रख लें रफली 25, तो आपने अभी तक जो सीखा एग्जैक्टली वैसे ही बोलते हो, आप वैसे ही बिहेव करते हो और आप सोचते भी वैसा हो। अगर आपको कॉन्शियसली आपकी पर्सनैलिटी डाइसेक्शन ना किया जाए तो बिलीव मी लाइफ लॉन्ग ऐसे ही बिहेव करोगे, और आपसे अगर मान लीजिए गलतियां हो रही हैं, यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट आउट, फिगर इट आउट वेदर आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक और नॉट। सो थिंक इट विद दिस, these 3 years are not only to learn the medical science, you have enough opportunity, enough time to learn other important traits like communication, sharpening your communication skill as well. बहुत सारे ऐप आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, यूट्यूब एक ऐप आता है, अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर, फ्री में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, उनको आप कंप्लीटली यूज करिए। ठीक, तो आपको अच्छा क्लिनिशियन बनना है, आपको कम्युनिकेटर बनना है, आपको अच्छा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। लाइफ लॉन्ग लर्नर सपोज कि आप आपने अभी तो पढ़ाई करते हो बिकॉज कि यू हैव टू पास एग्जाम, बट लाइफ लॉन्ग लर्निंग लाइक इफ यू से सपोज आई एम अ साइकियाट्रिस्ट एंड आई हैव टू चेयर अ सेशन ऑन ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस एंड यू जस्ट गिव मी अ टॉपिक and I can make a well set comment within 15 minutes. So how many of you are aware that by using Merlin Room extension you can read a scientific paper hardly within 15 minutes, any scientific paper. Suppose you have to present a scientific paper on a topic, within 15 minutes you will be able to present the whole paper. So if you need the detail, you can come to me, contact me. So Merlin Room extension, Gamma, yeah, there are so many apps available. So you have to learn a lot of things, not only this medical science you are learning. You can learn a lot of new things. So the leadership is a very important thing. Right now the only thing which is in your mind or the student is that I have to learn the medical science and I have to become the expert of a particular subject. But believe me dear students, after some years, you will be realizing that you would be assigned those responsibilities which were not your forte, those were not your areas of expertise. Like, do you think that respected principals are sitting here or the medical superintendents are sitting here and they have been especially trained to take this responsibility? No, not at all. So you have to bestow upon a lot of big responsibilities and you have to understand how the leaders are being generated or trained or they are being created. So you have to also understand that though you might be the junior most specialist, I must say, in your department or the JR1, but under you there are nurses, then there are staff going. What was staff, housekeeping staff. So you are the team leader. You are a team leader and you need to understand how the team leader really works. So this is the one important training of the postgraduate students so that they can become great leader in future, not only just a doctor. Maybe some of you would be the director of one of the most prestigious institute in India. What do you think, that you would be just seeing the patient at the OPD? No. You have to handle a lot of administrative work.
And if you are not prepared for this, believe me, that's very difficult. Now, my teacher, when I was a student in BHU, and as a student like you, my teacher one day called me up and said, Dr. Ganesh, where is your office? So I said, ma'am, I stay in the hostel, where will be my office? She reprimanded me very harshly and said, you will never excel in your life since you don't have any office. So I wondered for 2 days, ma'am, office? Yes, every administrator must have an office. So she asked me, what do you see in my office? I said, ma'am, you are sitting at the table, chair, your laptop, your printer. Ma'am said, yes, printer. Purchase a printer today only. Any doctor who is going to hold an office, who is going to become a leader, must have practice of being a leader. Go and purchase a printer. Because हम डॉक्टर्स लोगों की आदत होती है किताब से पढ़ने की, तो लैपटॉप में नहीं होता। आप प्रिंटर खरीदो, प्रिंट आउट निकालो, पढ़ो उसको। अभी एडिटर साहब ने बोला प्रिंट करके हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको वो रहेगा हमेशा। तो एक प्रिंटर से बहुत कुछ लाइफ में चेंज हुआ। वो प्रिंटर आज भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। प्यार से करेगी चीजें 16-12 साल में रहती। तो आप लोग लीडरशिप क्वालिटीज भी लर्न करेंगे। प्रोफेशनल, आई विल वाइंड अप विद इन 5 मिनट्स। प्रोफेशनल का मतलब होता है that you have to have the good level of expertise so that you can manage any kind of complication of your specialization with maintaining the highest degree of ethics and moral values. And you must take accountability of your patient, your profession and your society. So accountability is very important. Patient देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन किए, बीएचडी को मैंने रिकॉर्ड सेक्शन में टाइम पे सबमिट नहीं किया, तब फिर नहीं बात करेंगे, ठीक है? तो you have to maintain high degree of professionalism in your career. The take home message here, students, would be few. Like you need to understand that becoming a doctor doesn't mean that you have to have good level of clinical skills only. Rather, it comprises of all 5 domains. You have to play the role of a leader. You have to have excellent communication skills. You have to have lifelong learning attitude. It's not like that you have just crossed the exam and you will pass and after that the life is better of roses. No, not at all. If you will become academician in an institute, you have to publish paper for rest of life. So you have to have very good academic and lifelong learning attitude as well. So you have to maintain professionalism and you have to maintain all these 5 basic traits. Lastly, you are part of, you have become the part of this great institution with a great legacy. Believe me, great legacy. Feel the proud. If you don't feel the proud of being attached to an institution, believe me, your roots will always be shaken. Remember how many times principals have said that when I was a student of BHU, I also said the same. Because if you're proud about my institute, you would also feel proud about this great institute which has progressed by leaps and bounds over the last 2-3 years under the leadership of principal sir and the faculty members. Only if you feel like so. If you feel like so. अगर आप जाओ बाहर और लोग कहें कि वाह यार GSVM के लड़के हैं ये, इनमें बहुत दम होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो पॉसिबल तब है जब किसी तरह में लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे और तरह में बच्चों को बहुत सपोर्ट करोगे, जिससे कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा। आप लोग जब बाहर जाओगे, लोग कहेंगे कि यहाँ के बच्चे स्ट्रेस में भी कभी पेशेंट से मिसबिहेव नहीं करते हैं, बहुत अच्छा एम्बियंस है वहाँ का। And believe me, this PG orientation program will last 3-4 years. Significant reduction in this doctor-patient conflict has come up. This is a big achievement for GSVM under the leadership of Principal Sir and the convener of the program, Seema Dve, and the whole team. So big round of applause for them. Thank you. I would have... No, sir, I just not it. Thank you. Is anybody want to ask? Last question, very quick question. Thank you so much. Lastly, hero की तरह रहना. You all are hero, real gem. Feel it like this. If you don't feel like a real hero, you will just become part of the crowd. You will never become the leader or hero.
Feel like always and behave like this. Chalo, all the best.